Hello and welcome back to High Performance Hub. So first of all, really apologize for delaying the session. तो आज आप लोग को पता है हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पैरामिड जो हमें बताता है वेयर वी आर, हम अपनी जॉब में कितने सेटिस्फाइड हैं, जहाँ एज अ बिजनेस ओनर हमारे एम्प्लॉयज कितने इंगेज हैं, कितने नहीं हैं, वो सारी चीजों को डिस्कशन के अंदर हम लोग अभी तक लेके आ चुके हैं। तो सबसे पहला पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। I guess I'm getting somewhere wrong. Before I proceed with the explanation of last session, let me welcome my co-fellow Nakul. He is a top one performer coach, and I'm your host cum speaker, business coach Jasmine. Welcome, Nakul. So sorry. No problem, Jasmine. Thank you so much for having me here. Please do continue. I guess आप बहुत अच्छा point कोई add कर रहे थे about the ladder part. Yeah, please do add that. Yeah. Definitely we'll discuss later, but I really want to know कि आपको कितना excitement हो रहा है, because आज हम वो ladder complete करने वाले हैं discussion की. Yeah. So I'm super excited for sure, and this ladder is really magical. It gives us a very clear indication of where we are standing among the 5 levels and how we can proceed further. Or if we are an employer, we could see that where our employees are put up and how we can utilize them or empower them with our some amazing things and get them on the top performance. Yeah. Definitely. So super excited. As you I know that, but I guess now let's coming back to your point. It's true. ये सब अगर लोग क्या कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को समझ लें, then they will be at that top 1%. So guys, let's start with our topic today. हम लोगों ने पैरामिड के बॉटम को डिस्कस किया था, जिसको नाम दिया गया था सर्वाइवल का. सब सर्वाइवल वाले पर्सन किस माइंडसेट के साथ होते हैं कि मैं तो यहाँ पे बस पैसे के लिए हूँ, जब मुझे कोई कंपनी अच्छा पैकेज और ऑफर करेगी मैं तो निकल लूंगा. क्या आप भी ऐसे हो? आई होप आप नहीं हो, क्योंकि एज अ बिजनेस ऑनर इट्स अ रेड फ्लैग, बिकॉज ये पर्सन बिल्कुल भी एंगेज नहीं है, ये आउट ऑफ द बॉक्स वाले, ये क्लॉक वॉचर पर्सन है. तो अगर आपकी कंपनी में ऐसे पर्सन हैं, सो इट्स अ रेड फ्लैग फॉर मैनेजर्स एज वेल एज फॉर अ बिजनेस ऑनर. सो गाइज, एसएमईज एंड एमएसएमईज के लिए रेड फ्लैग्स अच्छे नहीं है. सो प्लीज बक अप योर शूज एंड सी कि आपकी टीम कहाँ पे है, कैसी है. राइट नाकुल? 100%. Yeah. Okay. So now coming back to another part of the ladder, next step of the ladder, that is a security. अब यहाँ पे लोग हल्के फुल्के engaged होते हैं, they are disengaged basically. I won't say that they are engaged. But उनका एक चीज पता है क्या है, उनको जॉब अच्छी लग रही है, but they have a lot of problems. They want to change their job highly every time. So वो जॉब कर रहे हैं क्योंकि उनको सिक्योरिटी है, उनके घर के खर्चे चल रहे हैं. जैसे हम कह सकते हैं रोटी कपड़ा मकान तो बेसिक नीड है, जिसमें वो घूम फिर रहे हैं, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे रहे हैं. दैट्स ऑल, एंड दैट्स व्हाई दे आर हियर विद यू टू डू द जॉब. ये लोग डिसएंगेज होते हैं, बट अगेन इट्स अ रेड फ्लैग फॉर द मैनेजर्स एंड बिजनेस ऑनर, एंड स्पेशली फॉर द पर्सन जो इस समय सुन रहे हैं हमें एंड देख रहे हैं कि वेयर दे आर स्टैंडिंग इन दिस लेटर. सो गाइज, अगर आप इस दोनों लेवल पे हो तो आपको मैं सिंपल बोलूंगी, आप लोगों के लिए रेड फ्लैग है, बिकॉज इट्स अ साइन ऑफ डीमोटिवेशन कि आप लोग मोटिवेट नहीं हो अपने काम को लेके, एंड विदाउट मोटिवेशन यू वोंट बी एबल टू सक्सीड इन योर लाइफ. आर यू विद मी? इफ यस, देन आप लोग हमें थम्स अप दे सकते हो, or you can type yes in a comment section as well. Right, Nakul? Powerful, yeah, powerful. Whatever you're adding is powerful. Yeah. Okay, thank you so much. And last week we have discussed about the belongingness. अब belongingness का जो है ना, वो पैरामिड के मिडल का पार्ट है. यहाँ पे लोग जो हैं वो लोग एंगेज्ड होते हैं, बट इतने ज्यादा नहीं. दे लाइक देयर वर्क, बट दे ऑलवेज हैव अ कंप्लेंट कि यार मुझे मेरा मैनेजर पसंद नहीं है, मुझे मेरी टीम पसंद नहीं है. they feel like they are they are important part. They feel like okay, ये कंपनी में वो belong करते हैं, but somewhere something are going on in their mind. तो अगर आपकी कंपनी में ऐसे पर्सन्स हैं, तो उनको हल्का सा पुश चाहिए, उनको हल्का सा इम्पोर्टेंस फील कराओ
और उनको पैरामिड के 4th लेवल पे ले आओ, दैट इज अ इम्पोर्टेंस इटसेल्फ। तो यहाँ पे आके आपका गेम चेंजिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओवर टू यू नकुल, व्हाट डू यू वांट टू ऐड? So I would like to add more on this line. I guess important feel करना या important contributor होना organization के अंदर really plays a big game. आपने एक word touch किया था in this session in the beginning कि knowing yourself, और मेरे को वो hit कर गया. I don't know how, but it got hit in my brain कि boss, this is magical thing Jasmine has added here, because there are so much things to know about yourself. What are your hobbies, what are your personalities, what are your personal traits, core values. अगर आप एक कोच के साथ काम करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे, you will be able to lead better. And in this important zone, obviously you get the access to the top management and you are able to drive more results here. That is where you get into this fourth level of driving the workforce, driving building the leaders in the team, or driving the business units. That's how it works there. And generally you are very highly motivated in this stage. You don't look forward to frequent changes until unless the change is very big. Somebody who comes with a very high level package or give you a better kind of a facilitation and things like that, then only you think about leaving the job. This is what we are calling as the fourth level member in the organization, who's on the second top level, and they are highly motivated, highly energetic to drive the business, to drive the human resources. And couple of things for organization, what they can try out is give them more leadership role, let them build their own community and set up things which can make them feel proud about being there in the system. So this is where I want to pause for a while and ask Jasmine to add more to it, and see if we can create some magic here. Yeah. दैट्स थैंक यू सो मच नकुल। आई गेस ये जो लेवल है ना इम्पोर्टेंस का, यहाँ पे आके एक बिजनेस ओनर ना अपना प्रॉफिट बनाना शुरू करता है। एंड अगर आप लोगों को लगता है नहीं, तो पहले तो सिर्फ ब्रेक थ्रू क्लियर होता है। अगर आपकी टीम अपने आप को इम्पोर्टेंट फील कर रही है तो क्या होगा? सबसे पहले दे स्टार्ट फीलिंग लाइक दे आर वाइटल पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। जब हम कहीं पे अपने आप को एक वाइटल पार्ट समझते हैं, चाहे आप उसको घर की एग्जाम्पल लो, अगर आप घर के करता धरता हो तो क्या होगा? आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे। तो वैसे वो भी पर्सन हमेशा स्ट्रेस में रहेगा कि मुझे इस बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। वो आपका बिजनेस समझ के काम नहीं करेगा, वो खुद का बिजनेस समझ के काम करेगा। तो एडवांटेज तो आप ही लोगों को। एंड एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, जो ऐसे लोग होते हैं दे आर रियली गुड। उनको हमेशा सिक्योर करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो पर्सन खुद से एंगेज हो रहा है तो आपको तो काम करने की जरूरत ही नहीं है ना। बिकॉज आपका काम है सिर्फ उसको पुश करके रखना, उसको उतना इम्पोर्टेंट फील करवाना। और सबसे बड़ी बात, जब हम ऐसे पर्सन के साथ काम करते हैं ना, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि दे फील लाइक ओके, मेरे बिना तो ये चीजें हो ही नहीं सकती। कई बार वो चीज गलत भी हो जाती है, बट स्टिल अगर हम लोग उस चीज को बात करें, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। दे फील लाइक ओके, आई एम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। वाइटल तो हूँ, बट आई एम फीलिंग इम्पोर्टेंट, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। आई गेस नकुल, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ? Absolutely. I was recalling in our last session also after the session, when I was able to work really amazing in my organization, the whole thing was happening in the background was I was playing with that importance mindset or growth mindset, जहाँ पे मेरे को organization ने freedom दे रखा था. Okay, Nakul, you lead, you take the decision, you handle the student team, and there was no question around this. And in that stage I was able to do so wonderfully because I could see that this was the best I could deliver there. And obviously there were new things दैट्स which ट्रू। I learned after coming out of job and all, which is more about coaching mindset, which recently when we took up this program of coaching and all, we really learned a lot of things like this 10x mindset, growth based things, and where you should invest your focus and energy. So amazing concepts. राइट। And I would truly recommend this kind of people who are in fourth level or third level people, who feel that you belong to the organization but now you want to go for one step ahead.
I guess you should surely work with somebody like Jasmine, or if you're looking for a career change into the leadership role, you should really work with a coach so that you'll get these better understandings. And I've also seen Mm, people after learning these strategies, they have got a very good growth. They have mentioned it after achieving it. Like in the job roles, after learning these concepts, they've got at least a very good growth, 20-30% minimum. mm, So it's a good that's thing to true. work with a coach. Yeah, yeah. So guys, it's not about Jasmine और it's not about नकल. आप किसी के साथ भी काम कर सकते हो अगर आपको आपकी ग्रोथ चाहिए, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव, और मैंने शायद एक कुछ टाइम पहले लिंक्डइन के ऊपर एक पोस्ट भी डाला था, इवन अ गुड एथलीट्स नीड अ कोचेस। तो हम और आप और क्या है, क्योंकि वो लोग तो आप सोचो कितने माहिर होते हैं, कितनी प्रैक्टिस करके आते हैं ग्राउंड में, स्टिल दे नीड कोचेस। एंड इफ यू वांट दैट काइंड ऑफ कोच फॉर योरसेल्फ, जो आपकी लाइफ के हिडन एरियाज को देख के, हिडन इश्यूज को देख के उसको रेक्टिफाई करके आपको लाइफ में आगे ले सके, तो इससे और क्या है मैटर करता। लाइफ में ग्रोथ मैटर करती है, ये मैटर नहीं करता किसके साथ कर रहे हो। ऑफ कोर्स पीपल विल कंसिडर इट कि किस कोच के साथ जाना है, किसके नहीं जाना, बट wherever you go, just have a leap of faith in that person or in that theories. You will definitely get at least 10x results with all those formulas. That's what I want to say. Now coming back to our major point, and उसमें क्या है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं अभी इम्पोर्टेंस वाले लेवल की ही, तो इम्पोर्टेंस के अंदर अगर आप एज ए एम्प्लॉय हो, जहाँ आप अभी बिगनर हो, तो आप क्या देखोगे। अगर तो आप अपने काम में इतना बिजी हो, आपको जॉब अलर्ट्स नहीं देखने का मन करता, आप अपने काम को, अपनी जॉब को एंजॉय कर रहे हो, देन यू आर एट द राइट लेवल। एंड यू नो, बिलोंगिंगनेस इम्पोर्टेंट, दे आर हाईली मोटिवेटेड पीपल। अगर आपका ऐसा है ना, आप डिमोटिवेट फील करो, आप इन लोगों के साथ जाके बैठ जाओ, ये आपको खुद ब खुद पुश कर देंगे, चल बाबा उठ, डिमोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं है। सो यू स्टार्ट लाइक ओके, मैं एक अच्छी कंपनी में हूँ, मैं अच्छी सराउंडिंग्स में हूँ जहाँ पे मैं अपने काम को एंजॉय कर सकता हूँ। एंड उस टाइम पे ना हर चीज मैटर नहीं करेगी, पैसा मैटर नहीं करेगा, आपको ये मैटर करेगा कि मैं किस सराउंडिंग्स में हूँ। आई ऑलवेज सेड पीपल जो एम्प्लॉयज होते हैं, गाइस डोंट चूज पैकेज, चूज योर बॉस, बिकॉज दैट बॉस कैन टेक यू समवेयर एल्स। वो आपका लीडर, कोच, मेंटर बहुत कुछ होता है। So that's the main thing. So choose your environment very wisely. Yes, package comes secondary. What do you want to say, Naka? Like you added a very powerful point, I guess. So मैं अभी रिसेंटली एक JWS के प्रेसिडेंट का पोस्ट फॉलो कर रहा था. He mentioned the same thing there. He said people are all worried about the increments and things like that, but what really matters is how you are able to get the space in the system, how much value you are able to create. I guess that is really is a sign of a growth there. You said it very rightly. And I wanted to add, okay, so let's add something for our viewers here. So I would request you, Jasmine, also to add something on this line. So I will give one tool which I have used while working in an organization, and getting a good outcome. So what I used to do is, whenever I was a coordinator, so I was in an alumni relations setup. So we have the maximum position Mm-hmm. of a director and manager or coordinator, similar like that. So I was appointed as a coordinator there. But whenever I used to sit on the chair in the morning, I will assume myself that I'm the CEO, I'm the chief executive officer of this, probably the department. And I will lead like Right. crazy. I will write out the goals every day. I'll drive it out. Mm. So I guess that is one thing you can try out. And something similar on that line is Mm. like wear different hats. When you are working with a student body, you can be more little calmer, lighter there. But when you're working with the management, you can be more aggressive there. Put up your points. So have different kind of hats at different places. I guess that would really create magic. Yeah. Yeah, that's true. नकुल, आपकी इस बात से याद आ गया, सीईओ, मुझे याद है मैं अपने बॉस से लड़ जाती होती थी कि ठीक है, मेरे काम में दखल नहीं देना, आपको क्या चाहिए, आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ चाहिए, पीपल ऑन टाइम चाहिए, सारी चीजें चलेगी, बट मेरे को मेरा काम करने दो। आई नो माई वर्क एंड आई नो बेटर देन यू एज वेल, बिकॉज समटाइम्स मैं उनको कहती थी यू आर गुड एट द टेक्निकल स्टफ, तो आप वो संभालो, अपनी ड्यूटीज को डिवाइड करो और मुझे मैनेजमेंट करने दो, आप टेक्निकल वर्क देखो, मुझे उसमें मत करो। सो इन दिस वे क्या होता है, जब हम अपनी अपनी
आई गेस पोजीशंस को भी अपने अपने रोल्स को भी डिफाइन कर लेते हैं ना, दैट्स वेयर द मैजिक स्टार्ट हैपनिंग। एंड यहाँ पे बिजनेस ओनर जो है ना सबसे बड़ी गलती करते हैं, हर चीज खुद ब खुद करने की जब कोशिश होती है ना, दैट्स वेयर एसएमईज एंड एमएसएमईज फेल्स, स्मॉल टू मिड साइज बिजनेस फेल्स विद इन अ 10 years। क्योंकि हम लोग सब कुछ खुद करना चाहते हैं, वी वांट कि हमारा पूरा कंट्रोल हो। ऐसा नहीं होता। आप सोचो, दिस इज द क्रूशियल पीरियड, दिस इज द लेडर का वो पीरियड है, अगर आप इसको देखो कि जहां पे आपके प्रॉफिट्स बनने शुरू होंगे। एंड इफ यू स्टार्ट कंट्रोलिंग, इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप रेत को अपनी मुट्ठी में भर लो, जितना टाइटली पकड़ोगे उतनी रेत फिसलेगी। दस, राइट? सो अगर आप इस चीज को एग्री कर रहे हो, तो आप ये चीज को कमेंट सेक्शन में लिख के बोलो कि यस यू वोंट डू एनी सच काइंड ऑफ थिंग्स कि जो आपको लाइफ में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करें, बिकॉज दीज आर द स्मॉलर सेशन, बट वी आर ट्राइंग टू ऐड अ वैल्यू जहां पे आप प्रैक्टिकली देख सको कि आपको क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी, टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेस ओनर, राइट नकुल? सुपर्ब यार, आपने बहुत अच्छा कंटेक्स्ट और यहाँ पे बिल्डअप किया है। And in this context, I want to go ahead and add one more thing very powerful. I just read today प्लीज। somewhere. So it was about being the smartest person in the room. So all the top business owners have, or I should say, not so good leaders have this issue of being the smartest person. I know everything kind of an attitude, which really kills your राइट। organization. And the person we are talking here, who's in the important zone or belonging zone, they are your 10x contributors. If you lose any one of them, your business is actually going big time. So you have to be very cautious about it. Like I remember about one of my main student team head. He said, and he came and he said, sir, I want to resign. I said, what is the issue? He said, no, sir, I'm getting into my final years and I'll not be able to contribute. I said, boss, you have worked so hard now. You have got all the skill sets, the soft skills, and everything. You have to just help the other juniors, to run the show. You not do all the work together, like not put 100% efforts here on. And then he stayed back. So it's just a little bit of coaching guidance. If you sit with your employees and you can stop them from going, I guess that can create magic. So being super smart really doesn't help. So I guess as a leaders, we should always be open and humble and kind to hear people out. And I'm sure I've read hundreds of leaders about on this mindset, and they had a great image in the market. Because people have different mindset. If I become soft, people will take advantage. It doesn't work like that. I guess people really understand who is a great leader and who is a normal leader. Yeah. So that's what I wanted to दैट्स add on सो this. ट्रू। दैट्स अमेजिंग आई गेस। चलो गाइस, आज हम अब बात करते हैं अपने फाइनल स्टेप की और मेन पार्ट ऑफ दिस पिरामिड, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, लोग सोशल मीडिया पे बहुत आते हैं, दे स्टार्ट डांसिंग अराउंड, दे स्टार्ट लाइक ओके मिमिक्री करने लग जाते। क्यों कर रहे हैं? because they want to show up to the world, yes they can do something great in their lives. That's why they use so much of this social media. They try to influence more and more people. If you're with me, just tell me, do you know any kind of person जो ऐसा कर रहा है? उनकी सबसे बड़ी खासियत होती है, they really inspire other people. They want to create impact in other people life, चाहे in a positive way, either in a negative way. क्योंकि दे वांट टू बी अ फेमस, है ना? तो वो इसलिए वो लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं। और अगर कोई अच्छे सेंस में ले, दे रियली वांट टू डू समथिंग फॉर अदर्स। फॉर एग्जांपल, एज अ कोचेस व्हाट वी आर डूइंग, वी रियली वांट टू डू समथिंग फॉर अदर्स। हम लोगों को ये लगता है कि जो चीजें हमने फेस करी है लाइफ में, कोई और फेस ना करे। जो हमने सक्सेस को लेके आने में 10 साल लिए हैं, वो आप उस सक्सेस को किसी कोच के साथ आके 2 साल में भी कर सकते हो कवर, 1 साल में भी कवर कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई स्टार्ट सीकिंग फॉर अ हेल्प। हेल्प मांगना बुरी बात नहीं होती। इफ यू नीड हेल्प, इफ यू कम आउट विद दैट, you will definitely get good results. Never give up on your dreams.
That's what I really want to say over here, because that's the meaning of self actualization. Never give up. What do you want to add? नहीं, I guess you added it very lightly and यहाँ पे एक और पॉइंट बहुत अच्छा है इन टॉप लेवल्स के लोगों के बारे में. These are all high flyers. These are people who lead the teams, lead the organizations, and they Hmm. drive the whole system. These are those people who enter the room and they create the magic there. And Hmm. I'm sure these are golden members of the organization, and no founder or their top executive can afford to leave this or lose these persons. So we must be very very careful about keeping them in the organization for a higher growth. And maybe I guess what could be done here is, as you mentioned about the self actualization, so I could remember Kapil Sharma on this level. He comes and express himself and make huge money out of it. I guess that is a kind of platform should be given. Or for example, this CEO, ex-CEO of Google, Sundar Pichai, maybe. Yeah. So he's another person who has come and Hmm. express his work to the audience, and obviously build a brand image for the organization, right? So I guess it's a very expressive state of these top people, and it is always better if we can utilize them for the benefit of the organization. Yeah. So that is where I want to end here, maybe. Yeah. Thank you so much, Nakul. Guys, as a business owner, this is the way, this is the place जहाँ पे आप लोगों की जिंदगियों में कंट्रीब्यूशन लेके आते हो. सबसे पहले तो हम लोग खुद के बारे में ही सोचते हैं. We are just driving with the fear. And ये लेवल आते आते तक we become so much, we become highly motivated person, highly engaged person. We start loving our life. वो कहते हैं ना कि काम काम नहीं रह जाता, काम ना एक एंजॉयमेंट बन जाता है. तो तब आपकी वेकेशंस भी वोकेशंस बन जाती हैं, वोकेशंस बन जाती हैं. एंड दैट्स द डिफरेंस, दैट्स अ मैजिक ओवर हियर. सॉरी इफ आई हैव समथिंग डन रॉन्ग. सो बट यहाँ पे अगर आपको किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है, अगर आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना है, देन ट्राई टू बी एट द टॉप 1% लेवल. ट्राई टू बी एट द लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां पे आप खुद की एक पहचान बना रहे हो. आप खुद की पहचान बनाओगे बट लोगों की हेल्प करके. वो कहते हैं ना, मी का एम को उल्टा कर दो तो दैट बिकम वी. तो काम करना है हमें, अभी जर्नी लेके जानी है मी टू वी की. सो दैट जर्नी विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर पर्पस इन योर लाइफ, हाउ यू कैन contribute to the world, how when you will get to understand what you actually want in your life, right, Nakul? As a top 1% coach, what do you want to say? Yes, आपने बिल्कुल सही कहा. और आई गेस दिस इज द माइंडसेट वी शुड कैरी टू द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब अगर आपको कुछ लगता है, जैसे जैस्मिन ने भी बोला ना, अगर आपको कुछ लगता है ऑर्गेनाइजेशन में कुछ होना चाहिए, so as a top 1% Hmm. person, recommend it there and show the pros and cons of it, and how you can create Right. magic with that campaign or the idea. I guess that is really great. Yes, yes, I agree with you on this. Yeah. And I guess आज का सेशन हम यहीं पे wrap up करेंगे. We will see you with the amazing content next week as well. So guys, if you have any question, you can write down now, or you can DM us as well. We will definitely answer you within a 48 hours so that um, you are able to connect with us in a personal level. Yes, Nakul. So as you mentioned about the top 1% level here, so I just want to add one Hmm. pointer or a case study. So I usually Hmm. work with student bodies or students so far, and I've seen them also Hmm. creating magic with this top 1% mindset. So let's take a case study. So imagine somebody who's studying in a college. I'll just take 2 minutes time, Hmm. and this person Hmm. goes Sure. to abroad. He goes to abroad and he does attend a lot of events there. Like he meet Google, Microsoft, or XYZ, and he Hmm. represent the college or the university there. And he takes his photo, Hmm. and these photos he sent to the management now, stating that I've been to this conference. I'm grateful to you. Basically, study abroad kind of a program for 6 months, and I met so many organization, and I was able to add value about our own college there. And once you do that, you actually get an and this is a real case study. And this person got an a call from the top management. Hey, that next time whenever you're going, we will sponsor you 16 lakh rupee program. You go and attend anywhere in the world.
So that is the kind of magic you create with this kind of me to be mindset, basically. So Abhi, let us not be Hmm. selfish when you are operating on that zone. Let us think for the organization, how you can add more value to the organization. And जैसे आप ये करना चालू करोगे ना, matching will start happening in your life for sure. Thank you, Jasmine. So I wanted to add this example there. Superb, yeah. Thank you so much, Nakul. It's amazing, I guess, amazing case study जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आज हमने कवर कर लिया. So guys, आपको क्या चाहिए? एक only एक single podcast is helping you to be helping everyone actually. I guess स्टूडेंट से लेके बिगनर एम्प्लॉय से लेके एम्प्लॉयर तक, बिजनेस ओनर, एसएमई, एमएसएमई, हर चीज एक सिंपल पॉइंट से कनेक्टेड है. देखने का नजरिया अलग अलग है, बस. एग्री. सो यहाँ पे ना एक चीज बोलनी चाहूंगी. मैं कल रात को कुछ पढ़ रही थी तो वहां पे ना एक बहुत पावरफुल लाइन थी. लाइफ इज इन एन ऑर्डर, प्लीज डू नॉट कॉम्प्लिकेट इट. लाइफ एक ऑर्डर में चल रही है, उसको और कॉम्प्लिकेट मत करो खुद से. आपको ज्यादातर जो आंसर मिलेंगे ना वो सिंपल थिंग्स में मिलेंगे, ना कि क्या कहते हैं ना कि आप कॉम्प्लिकेट थिंग्स के अंदर अपने आंसर्स फाइंड आउट करोगे. तो इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, try few simple things that will really help you to be at top 1% in your game, whether you are student, employee, or business owner. Right, Nakul? Powerful, powerful. Thank you for adding that. Okay, so with this note, thank you everyone for your lovely time. I know अपने क्या कहते हैं बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के पॉडकास्ट को सुनना और अप्रिशिएट करने में भी बहुत टाइम लगता है, but thank you so much for your presence. Along with that, thank you so much, Nakul, for adding a great value to this content today. Thank you मैं so आज much. वाकई See you next Thank week. हाँ, नेक्स्ट यस, आज सच में आज कन्वर्सेशन एक अलग ही लेवल पे चल रही थी. सो विद दिस नोट guys, it's time to say goodbye. See you next week on Thursday 7 p.m, not today. Same time. Yeah. Take care. Bye-bye. Thank you, Jasmine. Thank you, everyone.